वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो ट्रांसफार्मर की थ्योरी और ऑपरेशन पे है। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस जो क्या करती है, आपकी पावर ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर करती है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। एंड सेकेंडली एक चीज़ याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी भी आपकी सेम रहती है। अब यहाँ पे आपको एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिखाया गया है जिसमें एक कोर है, आपके पास दो वाइंडिंग्स हैं। आपने इसमें ये नहीं होता कि आपने किस साइड पे सप्लाई दी है। ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर बाइलेटरल। अब आपने एक साइड पे इसको सप्लाई दे दी वीटी। अब वीटी सप्लाई दी है आपने एक साइड पे जहाँ पे स्टेशनरी कॉइल है आपके पास। अब ये जो आपकी सप्लाई है ये एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई इज अ टाइम वेरिंग सप्लाई। टाइम वेरिंग सप्लाई supply to your stationary primary coil. What will happen? An EMF will be induced in primary coil. An EMF will be induced primary coil. This EMF will get linked through core. EMF produced in the primary circuit will get linked to secondary circuit through core, produces an EMF in the secondary circuit as well. जो हमारा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है कि आपके पास एक स्टेशनरी कॉइल है, आपके पास अल्टरनेटिंग या टाइम वेरिंग सोर्स है। आप टाइम वेरिंग सोर्स स्टेशनरी कॉइल को लिंक करें तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जिस कोर जिस आपकी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो थ्रू आपके ट्रांसफार्मर की कोर सेकंड जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ लिंक करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो सप्लाई दी है वो एसी अल्टरनेटिंग सप्लाई है। अब अल्टरनेटिंग सप्लाई की जो पोलैरिटी होगी उसके अपोजिट पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी हमारी इस कॉइल के अंदर। उसके अपोजिट को पोलैरिटी की ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस होगी इन कॉइल ड्यू टू आर्मेचर, ये आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहते हैं कि आपका हमेशा असर वजह की मुखालफत करता है। अब यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी उसके अपोजिट ही आपके पास क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अपोजिट पोलैरिटी में उसके ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू 4.44 एन पी इंटू एफ इंटू 5 मैक्स। अब यहाँ पे ई पी स्टैंड फॉर प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। EP stand for primary induced EMF, whereas 4.44 is a constant term. NP stand for number of turns in the primary coil. F stand for frequency, and phi stand for flux. Similarly, the EMF induced in the circuit due to flux linkage with the primary circuit is given as 4.44. NS means secondary number of turns. F, as I already told, the frequency remains same for primary and secondary circuit, and 5 max or flux. If we divide the primary induced voltages with the secondary induced voltages, we get NP over NS, because 4.44 and F and 5 max will get cancelled. We will get EP, that is primary side voltage, divided by ES, that is secondary side induced voltage. We get turn ratio, which is equal to EP over ES, that is secondary primary induced voltage to secondary induced voltage, is equal to primary number of turns divided by secondary number of turns. This equation is known as voltage ratio or turn ratio.
In this case, voltage ratio and turn ratio are equal. For transformer, voltage ratio and turn ratio are equal. Mean primary side voltage and secondary side voltage will be equal to primary side number of turn divided by secondary side number of turn. The notation used here are given. EP is primary induced voltage, ES secondary induced voltage, NP primary turn, NS secondary number of turns. If we consider transformer as ideal, ideal means there are no losses in transformer. There are no losses in the core of transformer, and all the flux produced in the primary coil is getting linked with the secondary coil. हम एक लम्हे के लिए अगर कंसीडर कर लें, ट्रांसफार्मर की कोर में कोई लॉस नहीं हो रहा, उसमें कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं हो रहा, कोई ऐसा एडी करंट लॉस नहीं हो रहा, उसकी कोर में जितना भी फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, वो सारा लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ। और आपके पास इसके अलावा आपके जो कंडक्टर्स हैं उसमें भी कोई कॉपर लॉस नहीं हो रहा, आपकी कोर सेचुरेट नहीं हो रही, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़ीरो है। तो इसी तरह जो करंट रिक्वायर्ड है मैग्नेटाइज करने के लिए वो भी कोई नहीं ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका कोर जो है उसमें सेचुरेशन तो होनी नहीं है, इसलिए कोई करंट आपको नहीं चाहिए होगा कोर की मैग्नेटाइजिंग के लिए। तो आइडियल कंडीशन के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, जो आपकी प्राइमरी साइड पे इंड्यूस्ड वोल्टेज हुए हैं वो आपके बराबर हो जाएंगे नेम प्लेट वोल्टेज के। नेम प्लेट वोल्टेजेस वो होते हैं जो ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज होते हैं, जो आप मैन्युफैक्चरर आपको उसकी नेम प्लेट पे लिख के देता है, दिस ट्रांसफार्मर इज एप्लीकेबल फॉर दिस वोल्टेज। if there are no losses, no saturation of core, all the flux is linking with secondary coil, then I can say that the primary induced voltage should be equal to the primary nameplate voltage, and similarly the voltage induced in the secondary circuit is equal to nameplate voltages of secondary circuit. This complete relation, or I can write this relation ignoring EP over ES. Now I can write that NP over NS is equal to VP over VS in case of ideal condition. This is known as turn ratio and it is denoted by A. Turn ratio is given by A, which is equal to NP over NS is equal to VP over VS. Now, as we have calculated the voltage ratio or turn ratio, which is EP over ES or VP over VS is equal to NP over NS, I can write that EP is equal to A into ES. What is A? A is turn ratio, as I discussed in previous slide. A is turn ratio, S is secondary voltages, P is primary voltages. Now I want to calculate the power in the primary and secondary circuit. The power in the primary and secondary circuit, as you know, power is given by V into I. Power is given by V into I, or EP induced voltages multiplied by primary circuit current, or and this is equal to, for ideal case, this is equal to secondary induced voltages and secondary current, or I can write that apparent power in the primary circuit is equal to apparent power produced in the secondary circuit. Now, what will be the current ratio? If I want, as I have already discussed the voltage ratio, what will be the current ratio? Considering this equation, where is my mouse cursor? अगर मैं इस इक्वेशन में अगर आप देखें IP over IS कैलकुलेट करना चाहता हूँ, what should I get? IP over IS. This IS will get divided by this IP, and this EP will get divided by ES. Mean the equation will become IP over IS, as written here, is equal to IS over IP. Now, sorry, IP over IS will get equal to ES over EP. Now, ES over EP, look at this equation. Where is my mouse cursor?
S ओवर ई पी क्या है, 1/a के बराबर है. सो आई कैन राइट दैट आई पी ओवर आई एस इज इक्वल टू 1/a, विच इज इनवर्स ऑफ voltage ratio, which is inverse of voltage ratio. I can calculate primary or secondary current from this equation if I know the turn ratio or voltage ratio. Now talking about impedance, refer to primary and secondary side. If we see the load impedance, अगर हम secondary side की impedance को देखते हैं या रेफर करते हैं प्राइमरी साइड पे, तो वो क्या होगी. सबसे पहले तो आपको पता है इम्पीडेंस किसके बराबर होती है, V ओवर आई या E ओवर आई के. अब जब हम बात करते हैं लोड साइड की, तो देयर शुड बी अ लोड, Z लोड is equal to the voltages in the secondary circuit divided by current in the secondary circuit. I will get the impedance of load. Similarly, for input side, I will get Z input, input impedance, which is equal to EP, primary voltages divided by primary current. From voltage ratio or turn ratio, I can write that ES is equal to EP over A, and similarly IS is equal to A into IP. These two equations are already discussed on previous slide. अब ये देखते हुए ES, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी साइड की, लोड साइड की इम्पीडेंस को रेफर करते हुए हम देख रहे हैं प्राइमरी साइड की तरफ से. तो ES और IS की वैल्यू मैंने निकाल ली. ES और IS की वैल्यू मैंने निकाल ली है. अब हम क्या करते हैं, ES और IS को इन टर्म ऑफ प्राइमरी सर्किट लिखते हैं. क्या होगा, ES ओवर IS विच इज इक्वल टू Z लोड, लोड की इम्पीडेंस थी. अब ES की वैल्यू जो कि मैंने निकाली है EP ओवर A, मैंने वो पुट कर दी. और IS की जो वैल्यू मैंने निकाली है A इंटू आई पी मैंने पुट कर दी. नाउ दिस इक्वेशन बिकम EP over IP into 1 over A square. The the load impedance, the secondary impedance referred to primary side will become EP over IP into 1 over A square. ये मैथमेटिकली जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ES और IS की वैल्यू को पुट करते हुए इस Z लोड वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास जो आपकी इम्पीडेंस आ जाएगी, लोड इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, वो आ जाएगी EP ओवर IP इंटू 1 ओवर A स्क्वायर. ठीक हो गया. अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ये हमारे पास जो टर्म थी ये Z लोड के बराबर थी, ये हमारे पास Z लोड के बराबर थी. जबकि ये टर्म जो हमारे पास बराबर थी वो Z इनपुट या इनपुट इम्पीडेंस के बराबर थी. सो आई कैन राइट दैट the load impedance Z load multiply, if I get this denominator A square get multiplied on the other side, Z load into A square is equal to input impedance. I will get this equation. Similarly, for transformer on primary side referred to load side, अब हमने उल्ट काम करना है. पहले हमने किया था लोड साइड पे एम्पीडेंस निकाली थी, रेफर टू प्राइमरी साइड. अब हमने उसके उलट काम करना है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमने क्या करना है, प्राइमरी साइड की इम्पीडेंस निकालनी है रेफर टू लोड साइड. नाउ वी आर इन रिवर्स प्रोसेस. वहाँ पे हमने लिखा था सेकेंडरी करंट और वोल्टेज को इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी करंट एंड वोल्टेज. अब यहाँ पे हम प्राइमरी करंट और वोल्टेज को लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी करंट एंड वोल्टेज एज बिफोर स्टडीज. now as you are now referring from secondary side to primary side, so I can write Z in is equal to ES over IS, because now secondary side have become input side and the primary side have become load side.
So I can write that Zn is equal to E over Es over Is, because now secondary side has become your source side and the primary side have become load side, or I can write Z load is equal to EP over IP. Now I will write EP and IP in form of ES and IS, which is given over here. EP is equal to A into ES, that is turn ratio multiplied by the secondary voltages. These equations are already discussed previously. Similarly, IP is equal to IS over IA. Now, I want to put these EP and IP in this equation. For load Z load, I can put EP over IP, that calculated here, as A into ES, which is equal to EP divided by IS over A, that is written here. It will become equal to A into ES, A into A over IS. Now A will get multiplied by A, it will get A square, and ES over IS, which will become equal to what? Z in. So I can write that Z load is equal to A square into Zn, which is your impedance referred from secondary side to primary side, which is your impedance referred from primary side to secondary side. Now there are two problems here, numerical problem. पहले प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, 25 kVA ट्रांसफार्मर, इसकी रेटिंग है 7200 to 240 वोल्ट. इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सेंटर टेप्ड है. 240 मीन अगर आप एक्सट्रीम टर्मिनल्स पे देखेंगे 240, अगर आप सेंटर टेप और किसी एक टर्मिनल पे देखेंगे तो यू विल गेट 120. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट रेटेड वोल्टेज. It supplies a single phase load that an equivalent impedance. Now you are given an equivalent impedance as 7.2 with an angle of 36.9 ohm. Assume load operation, assume ideal operation and find. कहता है आपने find क्या करना है, turn ratio, secondary current, turn ratio A, secondary current IS, primary current IP, load Z as seen from primary side, and real power, apparent power, along with your reactive power as well. As you know, you will get A, that is what? Turn ratio as primary voltages divided by secondary voltages, or primary turns over secondary turns. Primary voltage you have 7200, secondary voltage is 240. You will get what? A is equal to NP over NS, which will be equal to 30. So you have got turn ratio which is equal to 30. Now secondary current. As you know, IP over IS, as discussed earlier, that is equal to 1 over A. I have got 1 over A. I have to compute IP, primary current. So this IP will remain here and IS will get multiplied here. I will get IS over A, that is equal to IP. Now, as you know, you have you know your load impedance. You know your load impedance and you know output voltages. You can compute the current on the secondary side using Ohm law formula. I is equal to V over Z. You have 240 volts on the secondary side, whereas you have 7.2 ohm with an angle of 36.9. It is impedance on load side. You will get secondary current 33.3 with an angle of 36.9. You have got secondary current.
सेकेंडरी करंट आपको मिल गया है। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट की अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, आई पी इज इक्वल टू आई एस ओवर ए। आई एस अभी आपने कंप्यूट किया है, जो क्या था 33.3 with an angle of 36.9 एम्पेयर। इट विल गेट डिवाइडेड बाय 30। तो आपके पास जो इनपुट करंट है या प्राइमरी साइड का करंट है, इट विल बी 1.11 with an angle of 36 point minus 36.9. Now you have to compute the output impedance as seen from primary side. Now you will use the formula for finding impedance seen from primary side, that will be equal to A into Z load, because Z load was already given and we have computed A. अगर हम A को और A स्क्वायर और Z लोड को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी इनपुट इम्पीडेंस निकल आएगी रेफर टू प्राइमरी साइड, which is equal to Z in is equal to 6480 with an angle of 36.9 degree. Now you have to find powers and power factor. Simply you have to find real power, apparent power, and power factor along with reactive power. You know that the formula for apparent power is V into I conjugate. Now, as you already have given secondary voltages, you have computed secondary current. Put these values over here, you will get the secondary side apparent power. The apparent power, that is 8000 with an angle of 36.9 degree. As it is apparent power, so its unit would be volt ampere. You have got your secondary side power. Now same procedure will be followed for primary circuit. You have primary voltages, you have primary current, you multiply both these, you will get the primary power. Now you see the secondary apparent power and the primary apparent power are same. This show that the transformer given here is ideal. All the power from primary circuit is transferred to secondary circuit without any losses. Power factor, you know that if you solve the right angle triangle, you will get the formula for real power as Pt is equal to St into cos of theta. As you know St, you know Pt, sorry, you don't know Pt, but you know theta, that is power factor. But you will get Pt because St and Pt, if I consider primary side, if I consider secondary side, no matter because the power on both sides is same. So I get Pt as 8000 into cos of 36.9, which is equal to 6397.5 watt. Similarly for Qt, replace cos theta with sin theta, you will get as 4803 var the reactive power on in transformer. And for power factor, you know that Fp is equal to Pt over St, which is equal to Pt, the power in the transformer, the active power in the transformer, and Qt, the reactive power in the transformer, which will be equal to 0.80 lagging. So you will get the power factor of 0.80 lagging. Now moving on to next problem, which is a 300 kVA 2400 to 120 degrees step down transformer have a frequency of 60 Hz single phase, operates at 2300 volts on the primary side. It supplies 115 kVA to a load that has a power factor of 0.723 lagging. Assume ideal operation and find. What you have to find? Secondary voltage at operating voltage, secondary current, impedance of the load as seen from the secondary side, impedance of the load as seen from the primary side. No issue, a simple numerical is given. You have given primary and secondary voltages, that is 2400 and 120. So you can calculate the turn ratio here.
2400 over 120, it will be 20. You will get a turn ratio of 20. Now you have to find secondary voltage at operating voltage. Operating voltage is, your operating voltage is 2300. You have to compute secondary voltage at the operating voltage. So you can use this voltage for formula. A is equal to Vp over Vs. This formula, for this formula you have to use working voltage, that is 2300, not the rated voltage, because it is given in the numerical. You have to use the working voltage, that is 2300 over 20, that is turn ratio. You will get your secondary side voltage from this formula. So this is the first part. For secondary current at operating voltage, it is simple to assume that IS is equal to S, the apparent power, over the secondary voltages. Now, as seen in the previous numerical, आपकी जो पावर होती है वो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड पे सेम होती है, अगर कोई लॉस ना हो. हमने यहाँ पे भी आइडियल कंडीशन ही ली है. सो यू हैव गिवन apparent power 115 kVA. 115 kVA, because it is written over here. It supplies 115 kVA to load. Mean the load connected is 115 kVA. 115 kVA you have given on the load side, and you have been given the secondary voltages. Secondary voltages are 115. So you can compute the secondary current as 1000 ampere or 1 kilo ampere. For load impedance seen on the secondary side, as you know, the formula for impedance is V over I. You know Vs, you know Is. You have found the secondary impedance by dividing the secondary voltage and secondary current. You know power factor in the numerical was given 0.73 lagging. Now you can compute the theta. Theta will become 43.7 degree. Now you have to calculate impedance with angle. It will become, secondary impedance will become 0.115 with an angle of 43.7 degree. 43.7 degree. Now in the next part, you have to find impedance seen on primary side of transformer. The formula you already know is Zp is equal to A square into Zs. You have calculated A as 20 and Zs, which is secondary voltage, at 0.115 with an angle of 43.7 degree. You now can compute the primary impedance. जो primary impedance आप compute कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 46 with an angle of 43.7 degree, and this is as impedance, so its unit will be ohm. So this is from this lecture. We will come back with another lecture very soon. Thank you for listening.